बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिलावर हुसैन और आप देख रहे हैं डीके टेक्नोलॉजी। दोस्तों, हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम कैसे फ्री टीवी चैनल से चला सकते हैं और स्पोर्ट्स चैनल बहुत ही अच्छा है कि नियाज़ी टीवी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, चल शुरू करते हैं। नियाज़ी टीवी मैंने ओपन किया है। दोस्तों, बहुत ही अच्छा ऐप है नियाज़ी टीवी, जिसमें बहुत से फ्री चैनल्स हैं। यहाँ पर मैं आता हूँ स्पोर्ट्स चैनल में। दोस्तों, आज इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है तो मैं उसे ओपन करता हूँ। दोस्तों, ये फ्री चलती है टीवी, लेकिन मेरे पास ये टैबलेट है, इसमें सिम नहीं लगती, इसलिए वाईफाई पर यूज़ कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इंडिया का मैच, ये देखें स्टार स्पोर्ट 1 चल रहा है। इसी तरह आप भी, मैं स्क्रीन ऊपर कर देता हूँ। ये देखें 280 स्कोर है, 4 आउट है। अगर आपको ये नियाज़ी टीवी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। दोस्तों, ये टाइम देखें, सैटरडे 10:19 है, 26 जनवरी है। आप देख सकते हैं मेरे पास लाइव चल रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर अच्छी न लगे तो डिसलाइक कर दें। ये आप, मैं इसका आवाज़ बढ़ाता हूँ। Along with Raidu. He isn't your typical finisher. He's not someone who's going to muscle the ball. He's not someone who's going to hit you for sixes. He's a smart operator. He's got a lot of first-class runs under his belt. Triple century as well. You think that's why he hasn't been able to absolutely nail his position, is that it is a considered power game today, especially white ball. And because he isn't a power player, he's got to break that perception. He's effective. Strike rate also tells you a story. But then the fact also is that whenever he's batted at 4, in fact, some of his better innings have come when he's batted at 4. It's just that spot is not available anymore. And he's making himself useful with some handy bowling as well. Or to just speak in the last one-day international against Australia, which India won. Give or take a run or two. I think he scored 27 of the last 30-odd runs. 31 runs needed with Dhoni at the other end, and he was able to get in and get set and also chase it. So India's got two of those. One is Kedar, the other is Dinesh Karthik. Karthik is also someone who's now pitched as a finisher. He's done a fairly good job as well in the IPL and also international experience that he's got, but not someone who muscles the ball. Protection at deep square this time.